Welcome to Inspire Campfire, a podcast where ordinary people tell their stories of extraordinary adventure. These are campfire stories meant to inspire the rest of us to light the fire within, get outside, follow our dreams, and return to tell our own stories. Ready? Let's strike the match. You are about to listen to a conversation with a truly accomplished adventurer and mountaineer who I spoke to from the other side of the globe. While our guest speaks both the English and Hindi languages, we found this conversation hit a much deeper level in Hindi. This is an amazing episode. For my English-speaking listeners, have patience because my co-host provides terrific translations. Hope you enjoy this one. Welcome to the show. I'm your host, Scott Wurzbacher, and today we have a very unique and special episode for you as we cross the globe to hear Himalayan mountaineering stories directly from a local who grew up in the mountains of India. Our guest is Amit Negi from Himachal Pradesh, India. Amit was raised in a small village in the high mountains and early on became a high-performing professional athlete competing at high altitude. He soon became interested in mountain climbing through both direct experience and formal education. And over the past 4 years, Amit has climbed some of the highest and most dangerous mountain peaks in the world, including 3 over 8,000 meters or 26,000 feet. They are Mount Everest, Kanchenjunga, and Mount Annapurna. When it comes to mountaineering, Amit is the real deal, and we are about to learn what fuels his desire and call to the mountains. Now, joining us as co-host for this episode, we have my very good friend and past guest, Krishna Kumar, with whom I recently traveled to the Kingdom of Bhutan. We both live in Charlotte, North Carolina, but Krishna spent most of his childhood and young adult life in the city of Bangalore, South India. Krishna is an avid hiker, and we share a fascination with the Himalayan mountains. And I am delighted to have him with us to help facilitate today's conversation, as Inspire Campfire has become not just a global podcast, but also a global community. Amit, Krishna, welcome to the campfire. Yeah, thank you, sir. Thank you guys so much for being here. I'm so excited. So as I talk about this being a global podcast and a global community, that is true. So the reason that we are all here today, we were connected by some past guests. So Miriam Lancewood and Sophie Hilaire. Miriam was episode 88 and Sophie Hilaire was episode 95. They're two amazing adventurers, and they spent 2 months trekking through the Himalayas this past fall. And Amit, they met you. And Miriam was incredibly inspired by your story and the adventures that you've taken. And so I just wonder if you could tell us a little bit about that chance encounter and the meeting that you had with Miriam and Sophie. Miriam, ma'am, visit in my village. First of all, I visiting to India, and a small passes she already conquered. And she also visiting my shop, and I'm totally shocked to the. And first of all, I introduce who are you and what kind of you will come to the Himalaya, and she explained me. Then she just talked about myself. Okay, what work you will done. Then I explained to the my stories, and she inspire, and oh, you are done to the lot of work, hard work, and achieving too much high mountains. So seriously, and another girls already reach in my home. I think a USA captain in Marina and USA captain. So she also traveling to the middle Himalaya passes and a lot of experience. Very strong woman. Yeah, so Sophie Hilaire and Miriam Lancewood, incredible people. Amit, can you tell us, I want for our listeners to get an understanding of what it was like for you growing up in India. And I wonder if maybe you could describe what your village was like. Sir, India is, like a beautiful country. And I born in the Himalayan region. Himalaya is like a range.
and 6,000 meter, 7,000 meter in India, middle Himalaya. And I'm so lucky to born to middle Himalaya, and a lot of mountain, like difficulties mountain in this place, and like tribal area situated like very nearby Tibet border. My my place is like 6 month is a winter, and the 6 month is like a beautiful weather and beautiful condition. People very hard work, and the mountain is always encouraged me and motivated me to the come to the climb and explore. तो आपका बचपना कैसा रहा? How was your childhood? My childhood, मैं बचपन से ही sports as a sports person था, like as an athlete, and my journey started as an athlete, and then I started to the volleyball. I play in my volleyball game, और उसके बाद धीरे धीरे मैंने चेस माउंट ट्रेनिंग में स्टार्टअप किया, लाइक कॉलेज कॉलेज समय में। लेकिन जो मेरा जो गांव का जो एक माहौल था, वो एक माउंटेन से जुड़ा हुआ था, क्योंकि मैं हमेशा माउंटेन्स को देखता था, घर से बाहर निकलता था, तो उससे बहुत मुझे मोटिवेट मिलता था। और मेरे गांव में काफी लोग सुबह उठते ही मॉर्निंग वेकअप एंड अर्ली वेकअप टू द हार्ड वर्किंग माय मॉम डैड एंड लॉट ऑफ पीपल। तो वहां से मुझे काफी मेरा जो बचपन था वो इस माउंटेन से गुजरा था। Acha, acha. So what he's saying is, growing up, even with the schools and things like that, he played a lot of sports. But every time he stepped out of his school, he would see the mountain ranges, and Mhm. that motivated him a lot. And he would see his parents work in the fields quite a bit, and they were hardworking. But to him, mountains were the calling, and that's what got him encouraged and encouraged him to get into this sport. I love this because that was going to be my next question is how did you get into mountaineering? So I wonder if we could go a little bit deeper and talk a little bit about sort of those first experiences with mountaineering. तो आपको तो आपको पहले पहले आप माउंटेनियरिंग किए ना, तो कैसे किए आपका? क्योंकि आप पहाड़ देखते थे, लेकिन कैसे मोटिवेट हुआ? क्या क्या किया आपने? क्या कुछ ट्रेनिंग किया, ऐसे ही गए कहीं? ड्यूरिंग मैंने जो एनसीसी की थी, लाइक कॉलेज कॉलेज समय में एनसीसी जो मेरा पार्ट था, लाइक तो वहीं से मुझे एक मोटिवेशन मिला। एंड एनसीसी में मुझे एज अ प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन जाने का फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिलेक्ट हुआ था, लाइक तो उस समय मैंने सोचा कि मैं एज अ बॉर्न इन हिमालय रीजन, तो मैं माउंट ट्रेनिंग शायद स्पोर्ट्स के साथ माउंट ट्रेनिंग क्यों नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं माउंट ट्रेनिंग फील्ड में आया, तो मुझे लगा कि मैं जितना भी हाई एल्टीट्यूड में रहता हूँ, लाइक बॉर्न हाई एल्टीट्यूड बॉर्न में रहता हूँ, तो विदाउट प्रैक्टिस आप हाई माउंटेन को कॉन्कर नहीं कर सकते विदाउट ट्रेनिंग। तो मुझे अपने फैमिली से भी काफी मोटिवेट मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल माय फादर इज लाइक अ शेपर्ड, एंड ही इज ऑलवेज मोटिवेटेड मी टू द क्लाइम टू द माउंटेन। तो उन्होंने अपने लाइफ में काफी शेपर्ड के साथ लाइव माउंटेन पे गुजारा था, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे वहां से डैड से मिला और मेरे मदर से भी। तो एज अ घर पे हार्ड वर्क एज अ फार्मिंग करते थे, सो आई एम सो इंस्पायरिंग टू द माय फैमिली। That's great. That's great. So his early motivation was from the National Cadet Corps, where he enrolled, and they had opportunities where they had pre-Everest training. And having been born in the mountains, and his father being a shepherd and having done, climbed up mountains himself, both his dad and mom were motivation for him, and he just pursued his passion. And it was through these small opportunities that he was able to shore up the skills and slowly get into mountaineering and doing scaling the peaks that he is talking about. या एंड उसी बीच में लाइक आई एम रियली सॉरी, एंड लाइक उसी बीच में मुझे लॉट ऑफ कोर्सेज मुझे पता चला, एंड मैंने किया। आई एम
first Indian to the completed my all courses to the all Indian mountaineering uh, uh, government institute, say like basic AMC Advanced Mountaineering Course, MOI Master of Instruction, Search and Rescue, Alpine Winter Training, and as a last liaison officer, I complete all over courses to the improve my mountaineering and my skills. That is great. That is great. So basically, just completing all the courses and making sure that he is skilled enough to climb all these, large mountain ranges. That was key for him. Yeah, you've got an I got a chance to look at your what we'll call it the resume before we had this conversation, and it's impressive the number of training classes that you've taken. I'm curious if you remember some of your earliest experiences climbing and like some of the feelings that helped you to like just want to come back. Those feelings of just the wow that you experience when you're on the mountain and those sort of feelings that called you to want to come back. तो आपको समझा वो क्या पूछ रहे हैं कि कुछ बताओ. नहीं आप अभी क्या एक्सपीरियंस जो कैसा लगा कि माउंटेन से वापस नहीं नहीं नहीं, आप पहले जब माउंटेन्स क्लाइंब किए ना तो एक अलग सा एक्सपीरियंस होता है. बाद Yes. में थोड़ा थोड़ा तो डर लगेगा, थोड़ा तो कुछ मुश्किल रहेगा. तो कैसे लगा आपको पहले पहले, बाद में जब एक्सपीरियंस ज्यादा हुआ आपको? स्टार्टिंग में लाइक मैं आपको बताऊं तो उस टाइम क्योंकि आई बॉर्न इन द हिमालय तो मुझे इतना डर तो नहीं लगा था, लेकिन जिस एल्टीट्यूड पे मैंने आई बॉर्न किया था तो उस एल्टीट्यूड से ऑलमोस्ट 8000 मीटर मुझे पहुंचना, तो मुझे काफ़ी डर का सामना करना पड़ा क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें देखा अपनी लाइफ में, काफ़ी कैजुअलिटीज़ भी देखी और बहुत बहुत कुछ सीखा भी उस माउंटेन से. एंड ये कि एक अनुभव मेरे लाइफ में एक बिल्कुल चेंजिंग आ गई इतनी जल्दी. मैंने कभी सोचा नहीं था इतने कम उम्र में. Acha. So initially, having been born in the mountains, he didn't face any immediate fear, but obviously climbing up peaks that are 8,000 meters, it was pretty high, and it was a daunting task. The mountains taught him a lot, and he learned through that experience and how and what you need to do and how you navigate, and slowly getting there. And he's just, and each experience got him more energized. बट अभी जोश भी सेम है अभी भी. Habibi, so he's equally as energized even now. So it didn't stop. You don't lose that passion, right? You don't lose the Right. passion for the mountains. Hey everyone, it's Scott here. This podcast is a passion project for me because I absolutely love adventure. And it's thanks to the effort of my residential real estate team here in Charlotte, North Carolina, that many of you know as the W Realty Group, that this podcast gets funded. This awesome group of people have unmatched levels of competence and caring for our clients. If you know of anyone looking to buy or sell a home, our team serves the Charlotte, North Carolina market, but we can also help you find an agent anywhere throughout the US or Canada through our highly connected network. When you support our real estate business, you are also supporting this podcast. Thanks for listening, and thanks for your referrals. I love this, and we're gonna move into some of the big mountains, because Amit, your Instagram is mind blowing. Some of the reels, you just sent me a reel today of you on Annapurna, and there was a giant avalanche coming down in the background, and I want to get to that and talk to it. Before we get there, just a couple other things on your CV that you sent me. There's a quote that says, "The modern world is encroaching upon many traditional ways of living. Much is thrown away and forgotten. I'd like to represent and promote the Kinnar culture in order to preserve my tribal background." And I just wonder if you could speak to this a little bit. सर कि अभी जो मॉडर्नाइजेशन जो हो रही है जो हमारे जो पूरे इंडिया में,
तो ट्राइबल कम्युनिटी कहे या बहुत सारे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट या बहुत सारे अपने स्टेट की जो कल्चर है वो धीरे धीरे वेस्टर्न लोग अपना रहे हैं। तो मैं इसलिए अपने कल्चर को प्रमोट कर रहा हूँ बिकॉज जो हमारी जो पुरानी जो पूर्वजों की देन है उससे हमारी जो आइडेंटिटी है, जैसे मेरा नाम, माय नेम इज अमित नेगी, नेगी इज लाइक आवर आइडेंटिटी, तो इसी की वजह से मेरी पहचान है हिमालयन में। और जो हमारा जो ट्रेडिशन है लाइक वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर, जो पहले के समय में कि टीवी नहीं होता था, सेल फोन नहीं होते थे, तो उस टाइम हम आपस में कनेक्ट होते थे लाइक फैमिली मेंबर्स एंड उसके बाद जो हमारे ब्रदर्स आपस में मैसेज कम्युनिकेशन या कोई आपके अच्छे या बुरा हो तो आपस में जुड़ने के लिए एक हमारा कल्चर होता था। यानी इन हिमालय वेरी फेमस फेस्टिवल लाइक फ्लावर फेस्टिवल, जो बहुत सारे लोग जैसे घर से आपकी मान लो बहनें शादी करके कहीं और जगह जाते तो उनको आपस में जोड़ने के लिए वो फेस्टिवल मनाया जाता था, तो लोग अपने आपस में लोग मिलते थे। दिस इज माय स्ट्रॉन्ग हमारी जो एक पहचान थी, और ये धीरे धीरे लुप्त भी हो रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उसको मैं फिर दोबारा बरकरार कर सकूं। और फाइनली मैंने पूरे वर्ल्ड में शायद पहली बार मैंने स्टार्ट किया एवरेस्ट से। जो मेरी जो किनौरी कल्चर कैप था वो अभी मेरे पास अभी तो नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता। तो उसको मैंने टॉप एवरेस्ट से शुरुआत की कि सबसे पहले बड़े लोगों से, यानी आप जब तक बड़े लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तब तक आपको रिस्पेक्ट कहाँ मिलेगा। इसलिए हमें अपने पूर्वजों को भी नहीं भूलना है। एंड देन आई माय कैब तो एवरेस्ट, कंचनजुंगा, अन्नपूर्णा में दिया। और मैं आगे भी अभी यूथ को यही कहता हूँ कि अपने कल्चर को ना भूले एंड और अपने जो मॉडर्नाइजेशन, ठीक है आप उसको भी ज्वाइन करो, बहुत ज़रूरी है, समय के साथ चेंज होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम कहते हैं कि हम अपने कल्चर को भूल रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने बुजुर्गों के साथ नहीं बैठोगे, अपने एल्डर्स के साथ नहीं बैठोगे, तो आप कल्चर को कैसे एक्सेप्ट करोगे? Yeah, so there were some little nuggets that Amit shared when he was talking in Hindi as well, Scott, which was India as a whole, as a country, is getting where very modernized and very westernized. And what he is finding is people are not holding on to their old, historical values and the culture. And he feels that the mountain culture that he grew up in was Mm, very sacred. There was a lot of camaraderie before cell phones, before TVs even existed. People mingled in town. There used to be a festival of flowers that people engaged and gathered, and there was a lot of camaraderie among people. And he feels that he wants to preserve a lot of that, and he wants to make sure that despite the westernization, he understands you need to move along with time, but at least preserve as much as you can with the mountain culture as we see it. I love this. Thank you so much for that. Amit, one more question before we get into some of the summits. Because you have in your career, both mountaineering and your professional athlete career, you've experienced a lot of firsts. So one example is you were the first Indian civilian to climb Kanchenjunga with another country's army. I wonder if you could just kind of share with listeners some of these firsts that you've had and what they were like for you. I think one of the country military, even in my country, never allowed to the civilian work with them without condition, because uh, every country military is some privacy is privacy is very important. And I am so lucky, and privacy, some like security, and I'm so lucky to the join to the another military, and he also like, and I'm so lucky person to the with the Nepali army give me a chance to the okay, you are come and we are both in climb to the Kanchenjunga. It was very difficult to the as a civilian person to the part of as a military to the joint expedition. And I'm so lucky. And my inside is like I also joined to the Indian Army, but unfortunately,
I never joined to the army. In case like I'm luckily to the कि मैं luckily था कि मैं नेपाली आर्मी के साथ ज्वाइन हुआ। वैसे तो मैं लाइफ में ये था कि इंडियन आर्मी भी ज्वाइन करता था तो उस टाइम नहीं हो पाया तो लेकिन मुझे सीखने को मौका मिला ज्वाइन करके और डील करने का मौका मिला कि किस तरह से कि एक्सपीडिशन में क्या कुछ सीखने को मिलता है मिलिट्री के साथ मिलिट्री क्या और मतलब किस तरह से अचीव करती है। Acha. So he feels it's an absolute privilege to work with the army, and as he stated, especially when it comes to the army, there's a lot of security protocols, privacy protocols, and he feels even though his passion was to join the Indian Army after the NCC, he feels that the Nepali army embraced him. And even though there were civilians that are not allowed to engage with the army and do whatever anybody could do, he feels blessed to have gotten the opportunity to train with them. And he feels, having trained with the army, he got a lot more skilled in everything that he does with climbing, the climbing skills, the physical fitness skills, and so forth. So he feels truly blessed for having trained with them. Yeah, I mean, that sounds like it was a real privilege. I'm curious how that came to be. तो आपको नेपाली आर्मी के साथ काम करने का मौका कैसे मिला आपको? मैंने कभी सोचा नहीं था। आई एम टू मच कंफ्यूज बिकॉज 2021 I achieved Everest and immediately I select to the next mountain, you know। तो कभी भी कोई भी select नहीं करता है कि और rest करता है। Almost 1 year people are resting and then start the next 8,000 meter। तो मैंने जब 8,000 meter कंचनजुंगा की and I reach in the Nepal in the base camp, no idea कौन सा who is my partner, who is like organization, and finally one chopper is come and say, oh, you are Amit, okay, you and we are both climb the Kanchenjunga। तो मैं बहुत शौक था उस टाइम नेपाली आर्मी के ब्रिगेडियर साहब पहुंचे थे इन द कंचनजुंगा बेस कैंप एंड लकीली और मैं मिला एंड तो बहुत खुश था और उन्होंने कहा कि हमें भी सीखने को मिलेगा जब उन्होंने ये कहा एंड क्योंकि जब कोई बड़ा आदमी आपको कहता है कि हम छोटों से भी सीखने को मिल रहा है इधर से भी सीखने को मिल रहा है तो उन्होंने मुझे पहले ही बहुत मोटिवेट किया और उनकी पूरी टीम से मुझे मुलाकात की एंड लकीली कंचनजुंगा जो नेपाली आर्मी का है फर्स्ट पहली बार एक्सपीडिशन था। अभी तक एवरेस्ट के बाद उन्होंने कंचनजुंगा एक्सपीडिशन नहीं की थी तो उसमें मैं लकीली पार्ट था पहली बार फर्स्ट इंडियन और उसमें लीड करने का मुझे मौका मिला एंड फाइनली 7 May I am top of the Kanchenjunga with Nepali army। He happened to come across this. So he had climbed Everest. And usually what happens is people climb Everest, they come back, they take a break. But he did not stop. He did not take a year break. He decided to go on to climb Kanchenjunga. And then at that time, the Nepali army was also planning on scaling Kanchenjunga. And one of the top officers talked to him and was really surprised at his perseverance in doing Everest and then immediately climbing Kanchenjunga. And as a top officer, Amit was really humbled by his comment that I'm a senior officer, but I'm going to learn from a younger guy like you. And I think that's great. And he embraced this opportunity and he even led the team to scale Kanchenjunga and made it to the top. Wow, and that's showed how it is amazing. done. What an honor and what a cool story. Let's move on to some of these high peaks. I want to talk about Mount Annapurna. This is 8,091 meters high, and it's not the tallest. Everest is the tallest, but it has been called the deadliest mountain on Earth. And I just wonder if you could tell us about this mountain. Annapurna, seriously, Annapurna is like a beautiful mountain. Not I'm sure, but it's very danger mountain I face in my life because many avalanches, strong wind और इतने सारे मतलब उसके चैलेंजिंग है
almost you reach in the Camp 1, that started with more danger in Annapurna. So almost like a steep, highest 65 degree angle or 75 degree angle उसका summit point है. तो more than danger. और जब भी मैंने दूर से देखा लाइक ठीक है ये माउंटेन ठीक है अच्छा दिख रहा है, जब मैं कैम्प 1 से ऊपर चला तो वो और भी डेंजर होने लगा क्योंकि उसकी जो विंड थी वो 100 पर आवर्स की किलोमीटर की पर आवर्स चलती थी और बहुत ही डेंजर किसी ने बिल्कुल सही कहा है एंड कि दुनिया की सबसे बिगेस्ट माउंटेन रेंज जो फैलावट में है और बहुत डेंजर जो अपने एवलांच के लिए फेमस है एंड स्ट्रॉन्ग विंड के लिए फेमस है वो अन्नपूर्णा एंड वैसे भी जो अन्नपूर्णा माँ को आप ये कहते हैं लाइक हमारे जो हिंदुज्म में जो अन्न की देवी जहाँ से हम खाना खाते हैं तो वो भी एक रिस्पेक्टफुल है एंड मैंने काफी लोगों को भी खोए वहां पर जो फेमस आई थिंक नॉइल्स है ना इस वेरी फेमस माउंटेनर जो मेरे साथ ही होते थे वेरी फेमस माउंटेनर उन्होंने मेरे कैंप 4 में ही दम तोड़ दिया था तो ऑलमोस्ट 12 टाइम एवरेस्ट समिटर थे वो बहुत फिर भी मैं अपने आप से नहीं हार मानता था क्योंकि हमेशा मदर हमेशा यही चाहती है कि जब तक आपको प्यार से तो रखेगी लेकिन जब तक माँ का जो बोलते हैं ना दरार और डांटना डांटना जब तक वो चलता नहीं रहेगा तो आप तब तक ऊंचाइयों में नहीं छूओगे. Yeah. So he says you're absolutely right that it is one of the deadliest mountains. He talked about he talks about the wind. Sometimes it can go as high as 100 kilometers per hour. Sometimes the ascent after you go past Camp 1, the ascent sometimes can be 65 to 75 degrees. But he feels Annapurna, that the mountain is named after our throat and how we swallow our food, right? It is the main, duct through which we eat. And he talks about, it's just like the mother. Annapurna is just like your mother. You get disciplined. You get this. You get yelled at, but then all these factors like the wind and the avalanches are like that. But then you persevere. You listen to your mother, and then you slowly make the progress, and that's how he scaled. And he goes, it was tough, but he took every experience, every little thing in stride, and slowly made the progress and Wow. worked towards I climbing up. love those metaphors. Can you speak a little bit to what makes Annapurna different from Mount Everest? Annapurna is like Everest is okay, world highest mountain. This is true. It's like but challenging is like Everest is too challenging. It's like first is Khumbu Glacier and second is like Hilir step. It's very difficult. But it's Annapurna is you can reach in the base camp and you started face lot of phases like Camp 1, Camp 2, and Camp 3. Camp 4, too much danger. Camp 3, Camp 4, too much danger every day, every minute, big avalanches. I think you saw in my videos in my Instagram. And मैं भी थोड़े थोड़े बोल्डर से बच गया था क्रेवासिस एंड बिग एवलांचेस से मेरे सामने से गुजर के चले गए थे एंड जस्ट लाइक 1 मिनट एंड आई एक मिनट की बस वो देरी थी काफी बड़े बड़े एवलांचेस मेरे सामने से गिरे थे और पूरे वर्ल्ड की जो डेथलेस माउंटेन में अन्नपूर्णा का नाम भी है लाइक more than two another mountain like Naga Parvat and the K2 is more than danger. तो अन्नपूर्णा इसलिए डेंजर है क्योंकि उसका जो समिट है वो बिल्कुल स्टीपली है वेरी वेरी स्लो बिल्कुल स्लीप तो उसका जो समिट है वो बिल्कुल सीधा भी नहीं है तो उस वजह से उसको और भी डेंजर बनाता है तो अभी भी बहुत लोग कोशिश करते हैं और 100 में से 70% चांसेस उसके हैं अनसक्सेसफुल के 30% उसके चांसेस सक्सेसफुल होने के तो उसका सक्सेसफुल चांस इज लाइक लिमिट वेरी लिमिट. So he talks about, but when you think about Everest, it is the tallest mountain, but when you talk about the degree of difficulty, Annapurna is by far the hardest mountain to climb. And
speaks of instances where there are times when he goes from camp 1 to camp 2 to camp 3, he has literally missed a boulder of an avalanche by a minute. It literally passes in front of him or behind him, and he barely makes it past. And he's been lucky enough not to have been caught in one, but he feels that that's what makes Annapurna so deadly, and the success rate of people actually ascending the mountain is only about 30%. And he talks about getting all the way to the top. He says the top is not flat at all. It is extremely steep. It is extremely steep, and it is not stable. So it makes it even more tougher compared to Mount Everest. Obviously begs the question about fear, right? I'd love to just get into the topic of fear and just spend some time talking about fear, because it seems to me that somebody that tackles a mountain like this has no fear. But I know that's not the case. So can you tell us about how fear comes into your life and your climbing on mountains such as Annapurna? तो तो आपको कभी डर कभी लगा आपको, क्योंकि आप अन्नपूर्णा के क्लाइम कर चुके हैं, कभी डर लगेगा आपको? नहीं, मैंने पहले मैं आपको बताऊं सीरियसली, मेरी लाइफ में जब मैं कैंप 2 से कैंप 3 से कैंप 4 की तरफ जा रहा था, तो वहां पर एक जगह वर्टिकल आई थी, ऑलमोस्ट 90 डिग्री का वॉल था। तो वहां मैं बहुत डरा था, बहुत ही मतलब मेरी जिंदगी का ऐसा पल था कि छोटा सा मिस्टेक, स्मॉल मिस्टेक, यू विल डाई इन द डीपली क्रेवास। तो वहां से मैं उस दिन को याद कर रहा था कि मैं अपने ट्रेनिंग को, जिस तरह से मुझे ट्रेनिंग कराया गया और जिस तरह से बस आपको आगे देखते चलना है और अपने आप को, बस उस समय मेरी जो बॉडी, मैं आपको रियलिटी बताऊं तो बहुत कांप रही थी, बहुत ही, मतलब बोलते ना, मतलब वाइब्रेट हो रही थी। तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया था। तो फाइनली जो थोड़ा सा जब ऊपर जाने का जब मैं रियलाइज किया कि नहीं यार, मैं कर सकता हूँ, और मैं मतलब कर रहा था, अपने आप को मोटिवेट कर रहा था। तो अब आगे तो डर तो इतना नहीं लगेगा जितना मुझे अभी अन्नपूर्णा ने डर दिया था, बहुत फियर। थोड़ा डर तो लगता है कि जब एवलांचेस गिरे थे तब अभी भी डर लगता है, थोड़े जो मेरे दोस्तों को मैंने खोए थे तब भी अभी थोड़ा सा डर तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई भी ऐसा माउंटेनर जो इन फ्यूचर अपनी लाइफ में आएगा, तो विदाउट डर के वो क्लाइंबिंग नहीं कर सकता, तो एज अ डर होना चाहिए। So his toughest test was when he was climbing Annapurna past Camp 4, where it was almost a 90-degree angle, and his heart started pounding and he started getting very jittery. He is not afraid to say he there was fear. There was fear, but then he recollected all his training and what you need to do. How do you stay positive? And the more and more he slowly started to make the way up and started taking one step at a time, the fear started to ease. His heart started getting a lot, his heartbeat started getting a little bit more calmer. But his point is, fear has to be there when you scale these mountains. You cannot be fearless. There are things that you don't know, and it's something that's there, but he is less fearful having scaled these tough mountains, especially like Annapurna, and he feels he is much stronger and has built a lot more physical skills and climbing skills to be able to do what he's doing today. You're inspiring youth and adults alike. You're inspiring me. Again, like if listeners get one thing from this episode, and that is to go to your Instagram and just see the work that you're doing, like it will have been worth it, because that's incredible. But I think to take this to the next step, because if you do visit your Instagram page, you're going to see not only a lot of amazing imagery on mountains, but also you involved in your community. I've seen things on your Instagram of you speaking to groups and being with kids. And I would love to hear a little bit more about some of the things that you're currently doing, speaking to groups and teaching and guiding and providing inspiration for kids.
यस, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अपने यूथ से इसलिए जुड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अब अगर आप आज की जनरेशन में अगर आप यूथ से नहीं जुड़ोगे तो मेरे ख्याल से फिर आपको वो सपोर्ट भी नहीं मिलेगा और यूथ को ये चीज़ पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आपने देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम में यू नोटिस माय इंस्टाग्राम अ, I'm going to the school programs and my colleges program and my youth functions and तो मुझे वहाँ जाके मुझे सबसे पहले और जगह से मुझे अपनी कम्युनिटी में जाना इसलिए मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगा क्योंकि बोलते हैं ना कि सबसे पहले अपने घर को सँभालना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको बाहर के लोग आपको जान सकेंगे और बाहर के लोगों को आप इंस्पायर कर सकेंगे। एंड मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ ये बहुत सीखा है कि घर से ही कि घर में हमेशा ये कहते थे कि जो मेरे मॉम डैड है कि पहले जो हमारे जो पूर्वजों का जो संस्कार जो दिए गए हैं, जो हम निभा रहे हैं, वो आइडेंटिटी उसको खोना मत और आने वाली जनरेशन को भी बताना कि ठीक है आप मॉडर्नाइज़ भी हो कोई बात नहीं, लेकिन अपने जो कल्चर है, अपने जो फैमिली मेंबर्स है, जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, एल्डर्स हैं उनके साथ भी बैठना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो न्यू जनरेशन है वो क्या है कि एजुकेशन के साथ वो बाहर चले जाते हैं। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। तो आजकल कहते हैं ना कि कॉमिक्स और वो चीज़ें तो हम पढ़ते हैं शौक से, लेकिन जो बुजुर्गों से दिया हुआ बुजुर्गों के साथ बैठे हुए उनसे पढ़े तो वो सबसे रियलिटी आपको मज़ा आएगा और वो सिखाएगा और आपके कल्चर को भी वो शायद भूलने नहीं देगा क्योंकि मैं भी अभी आप है, सर है, लाइक सेल फ़ोन अभी आज का है, लेकिन उस समय सेल फ़ोन होता नहीं था। तो मेरे ख्याल से वो कुछ 1-2 और जनरेशन बची है जो हमारे जो पूर्वज बचे हैं, जो बिना सेल फ़ोन के हमें पूरे ट्रूली कहानियाँ और ट्रूली सब कुछ हमें इंस्पायर करते थे। शायद हमें ये चीज़ें उनके साथ स्पेंड करना चाहिए लाइफ़ में। तो यही मुझे इंस्पायर करती है और मैं प्रॉमिस तो मैं 100% ये ज़रूर कहूँगा कि मैं जिस भी माउंटेन को क्लाइंब करूँ, तो मेरा ट्रेडिशनल वो या मेरे हिमाचल का हो, मेरे गाँव का हो या मेरे कंट्री का जो लोग पहनते हैं, तो उसको लोगों तक पहुँचाऊँ और लोगों को इनवाइट करूँ कि प्लीज़ आप प्लीज़ वेलकम टू द माय होम, विज़िट अ ब्यूटीफुल कल्चर एंड स्पेंड ब्यूटीफुल नेचर। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। So so he feels that his all his engaging with the youth, etc., comes from his mom. And his mom always told him, her ancestors taught her things that she passed on to him. Her father, her uncles did the same. He needs to carry that message onward. He feels that that is one of the strongest messages. You can read comics, you can read books, but there are messages and learnings that come from our elders and our ancestors that he wants to pass on to his people. And he feels that he needs to start with his own community first before he expands to other communities. And one other thing that, yeah, I failed to mention when we were talking through earlier, Scott, was he talked about he has this passion to climb, but for everything there's, you need funding, you need money. So he wants to make sure that he is carrying the right message and making sure that he's able to do what he's able to do to climb mountains, but also carry the message of how to take the kids off the streets and become better human beings. And he feels that that starts with the speeches and the work that he does at the schools, at the colleges, at the universities. Thank you. And that's a really great lead in to the next question, because I did want to bring attention to the fact that, Amit, you are raising money to be a professional climber and to fund future climbs. And I know that you have offered packages for sponsors that want to connect with what you're doing for opportunities to promote their brand. And I want to just give you the opportunity to talk a little bit more about what you're offering and what can happen when somebody connects with you for any sort of financial sponsorship. तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे जो जितने भी जो
स्पॉन्सरशिप है जो मुझे स्पॉन्सर करना चाहते हैं या सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैं उनको श्योर ज़रूर करना चाहूँगा कि मैं जिस भी माउंटेन में जहाँ भी जाऊँ तो एक प्रमोटिंग का काम मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ भी मैं क्लाइंबिंग करता हूँ हाई माउंटेन पे, तो वो एक बेनिफिट होता है कि जितने भी जो मेरे स्पॉन्सर होंगे उनको मैं ले जाऊँ और वहाँ पर भी उनका एक एडवर्टाइजमेंट हो, और जिससे मेरा जो लक्ष्य है मैं उसको पूरा करूं, क्योंकि विदाउट मनी जो आजकल है ना, तो आप माउंटेन्स तो छोड़ो, आप माउंटेन के बेस कैंप तक भी नहीं जा सकते, क्योंकि माउंटेन कॉस्टली है। तो एटलीस्ट अब धीरे धीरे माउंटेन कम्युनिटी भी बहुत काफी स्ट्रांग हो रही है, मैंने देखा, और माउंटेन पे लोग बहुत जाना चाहते हैं। तो मैंने अभी काफी नोटिस किया कि एज को देख के लोग ट्रैकिंग नहीं कर रहे हैं, अपनी फिजिकली फिटनेस के लिए कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। तो क्योंकि इन फ्यूचर जो हम सिटी पे वर्क करते हैं, सिटी पे रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को बाहर आना चाहिए और नेचर से जुड़ना चाहिए। और बाकी जो मुझे स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो मैं लिंक्स आपको दे दूंगा। मैं जिस टीम के साथ जा रहा हूँ वो कहलूर एडवेंचर टीम है, जो इंडिया से मुझे सपोर्ट करती है, जो इंटरनेशनल जिसे मनी ट्रांसफर का। तो कहलूर एडवेंचर जो आप जिसमें वो वर्क कर रहा हूँ, जिसका मैं बैनर ले गया था, तो उसके थ्रू मैं आपको डिटेल सेंड कर सकता हूँ, उसमें आप सपोर्ट कर सकते हैं मुझे। अभी जो मेरे नेक्स्ट माउंटेन है 2024 में 3 माउंटेन, तो उसमें जितने भी लोग सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट मनी तो बहुत मुश्किल है। बाकी अपने तरफ से भी मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी मैं ट्रैवलिंग टू द माई सिटी टू अनदर सिटी, तो बहुत मुश्किलें फेस करने को मिल रहा है। लेकिन मुझे भी अभी भी उम्मीद है, जिस तरह से मुझे एवरेस्ट, कंचनजुंगा एंड अन्नपूर्णा मुझे क्लाइंबिंग करने का मौका मिला, तो अभी भी गिव अप तो नहीं कहूँगा, नेवर गिव अप इन माई सेल्फ एंड ऑलवेज स्टैंड टू द माई कंट्री। तो हमेशा स्टैंड रहूंगा। So he feels it's an honor and privilege to have climbed the mountains that he has so far, and he feels that he will carry the brand for anyone that's helped sponsor him, do whatever advertising that he needs to do. But more importantly, he feels the sponsorship helps in two ways. One, to help foster the message that he is trying to bring forward. Second, even if it is people in the city, he wants them to get out and be one with nature. Cannot attest to that more. And he feels that's the message he wants to convey. And the best he can do is, he has he has the links to how you can sponsor him and do what is needed. But he feels that he will carry the brand and do whatever advertising or anything that we need to do to promote. I love it. Thank you guys so much. It has been an absolute joy. Krishna, thank you for being here to help facilitate the conversation. Amit, thank you so much for spending time with us today. And for those listening, I hope you've been inspired today as much as I have. I hope Amit's story has encouraged you to listen to the voice inside that calls you to adventure, because we want to hear your story next. If you have a story to tell or just need a nudge to create one, please send me an email. We'd also appreciate it if you'd help us spread the word by leaving a review and sharing or tagging Inspire Campfire in your social media. And until next time, I want to encourage you to get outside. Thanks for listening. Amit, Krishna, thank you so much for being here.